बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल चाल है डियर फ्रेंड्स आपके? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं सर ज़ुबैर अकेडमी विद सर ज़ुबैर। आज का जो कंटेंट है वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और ख़ास तौर के ऊपर आपके आने वाले जो एजुकेशन पीरियड है एकेडमिक ईयर्स में, उनके हवाले से जो है वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत का जो वो हामिल है। और मैं उम्मीद करूँगा कि ऑब्वियसली अब आपने भी इस चीज़ को जो है वो अब मेंटली प्रिपेयर करना शुरू कर दिया होगा। एक अहम तरीन चीज़ जो कि इंतहाई वसूख ज़राए के साथ जो है वो मुझे मालूम हुई है वो ये है कि पंजाब यूनिवर्सिटी हैज़ फिनिश्ड MA और MSc जो है एडमिशन जो है दैट हैज़ बीन फिनिश्ड। 2022 will be the last session academic year for the students as far as their masters are concerned। ठीक है, उनके मास्टर्स के लिए जो है अब वो तलबा सिर्फ जो कि 2022 के अंदर जो है वो इम्तिहान के अंदर MA का इम्तिहान जो वो देंगे, ऑब्वियसली जो है ये उनके लिए जो है वो लास्ट सेशन होगा। एंड ऑब्वियसली दोज हु विल फेल गेट सम कंपार्टमेंट और ड्यू टू एनी रीज़न they are failed, obviously they will be eligible to get appear in the next year and that will be their last chance. Okay, but in that condition the students will get their supplementary degrees. If they want to avoid to get the supplementary degree, so obviously they will have to work hard to pass their MA examination as much as they should work hard, obviously, राइट। अच्छा, दूसरी और अहम तरीन चीज़ जो कि आपके साथ में अब शेयर करने जा रहा हूँ वो ये है कि जो कि बहुत ही अहमियत की हामिल है। अब चेक की सारी बात है, पंजाब यूनिवर्सिटी ने जो है वो MA और MSc तो ऑब्वियसली पहले ही जो वो ख़त्म हो चुकी है। MA जो है वो एज ए प्राइवेट वो भी ख़त्म कर दिया है। और जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि ये उन स्टूडेंट्स के लिए लास्ट चांस जो है वो होगा, वो लास्ट टाइम जो है वो इम्तिहान में अपीयर होने जा रहे हैं। तो इस चीज़ के पेश नज़र वो बच्चे या वो बच्चियाँ जिन्होंने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट कर ली होगी, दे विल बी एलिजिबल टू गेट एडमिशन इन 5th सेमेस्टर regarding their any kind of a discipline in which they want to appear or they want to get their degree, right, academic degree। अब इसके अलावा और क्या चीज़ होती है, पंजाब यूनिवर्सिटी ने ऐसा क्या नया अमल जो है वो अडॉप्ट किया है एज़ पर एज प्राइवेट स्टूडेंट्स आर कंसर्न। तो उनमें से दो चीज़ें जो है मैं आपके साथ जो है वो शेयर करना चाह रहा हूँ। अगर आप इनके ऊपर ऑब्वियसली फोकस कर लेंगे तो अल्टीमेट बात है कि आपको जो है मेंटली प्रिपेयर करने में अपने आप को जो है वो आसानी हो जाएगी। क्योंकि ये चीज़ अब आप जहन से बिल्कुल भूल जाइए कि अब प्राइवेट MA जो है वो हो सकेगा। 2023 के अंदर देयर विल बी नो एनी काइंड ऑफ MA प्राइवेट एडमिशन विल बी इंट्रोड्यूस बाय द पंजाब यूनिवर्सिटी, राइट। अब वो चीज़ जो आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ वो ये है कि आई हैव सम प्रूफ एंड हियर द प्रूफ्स आर। ये आप देख रहे हैं कि उन्होंने जो है पंजाब यूनिवर्सिटी ने BSc जैसे कि BS 4 ईयर प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट जो वो कर दिया है। अब उसके अंदर जो है बहुत सारे जो स्टूडेंट्स जो कि प्राइवेटली अपीयर हुए थे, अब उनको भी जो है किसी एफिलिएटेड कॉलेज से जो है वो ऑब्वियसली वो करना पड़ेगा, इनको एडमिशन जो लेना पड़ेगा और उनकी जो डिग्री होगी वो एज ए रेगुलर डिग्री जो है वो होगी। और इसमें जैसे कि ये लिखा हुआ है कि कोर्स कंटेंट्स फॉर द सब्जेक्ट्स कोड विद इंग्लिश, ठीक है। अब ऑब्वियसली आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारी फील्ड्स हैं, बहुत सारे डिसिप्लिन्स हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली फॉर द इंग्लिश। Those students who want to get their degree in the subject of English, so I'm going to provide them this kind of an information. ओके अच्छा, दूसरी और अहम तरीन एक तो ये चीज़ आपको मैं बता दी कि अब आपका कोर्स कोड जो होगा उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वो दिया जाएगा, एडमिशन जो दिया जाएगा, पेपर्स वगैरह दिए जाएंगे। और इसके अलावा एक और अहम तरीन चीज़ वो ये है कि अब आपका एनुअल सिस्टम जो है वो ख़त्म हो गया है, बल्कि इसके सब जगह पे आप उन्होंने आपको सेमेस्टर सिस्टम जो है वो स्टार्ट करेंगे। In that condition, obviously when the students will get admission in any affiliated college affiliation or affiliated by the Punjab University, so it will ultimately they will have to appear in 4 different semesters. Okay, so each semester will be consisted on approximately 4 to 6 months, obviously, right। अब उसके अंदर आपको क्या क्या सब्जेक्ट्स कोर्स जो है वो पढ़ाए जाएंगे, लेट्स टॉक अबाउट दैट। सो आई हैव हियर another proof, and that is your this course code English 101, right? This is the first year, right? This is your English subject, and there we will have to spend 3 credit hours.
ओके जी, एज पर एज जैसे ये आपको चीज़ पे बहुत अहम तरीन चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि क्रेडिट आवर्स दैट प्ले अ वेरी मोस्ट एंड द वाइटल रोल. ठीक है, इफ यू टेक द क्लास और गेट द एडमिशन इन एनी काइंड ऑफ यूनिवर्सिटी और द सेमेस्टर प्रोग्राम एंड you remain absent from there and you do not mark your attendance there, so ultimately at that stage your credit hours will be calculated. If they will be obviously according to their requirement, then you will be appear you will be capable to appear in the semester examination. Otherwise you will be declared ineligible to appear in the semester examination, right? अच्छा, दूसरी चीज़ ये है जो कभी आपको अपने एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वो शेयर करना चाह रहा हूँ वो ये है कि सेमेस्टर के साथ साथ जो आपकी अटेंडेंस जो कि वहाँ पर मार्क होती है, दैट इज़ द मैंडेटरी. I mean mandatory. Mandatory mean कि if you will skip any single attendance, right, so they will fail you. ठीक है, तो ये चीज़ जो है आपने अपने माइंड में रखनी है, क्योंकि अब आपके लिए स्टडी का वो क्राइटेरिया नहीं रहा है कि जो कि अपनी मर्ज़ी से आए और अपनी मर्ज़ी से जो वो चले गए. बेटा यू हैव टू स्टडी एंड इफ यू वांट टू गेट डिग्री ऑब्वियसली एनी काइंड ऑफ स्पेशली डिसिप्लिन, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट द इंग्लिश. ओके जी, ओके जी. नेक्स्ट चीज़ ये है कि व्हाट काइंड ऑफ सिलेबस यू विल हैव टू रीड, राइट. हियर इज़ द लिस्ट, द पीरियड. ठीक है जी, ये पीरियड जो है आपको डिफरेंट जो है वो पोर्शंस के अंदर जो है वो दिया जा रहा है, दिखाया जा रहा है और इसके अंदर जो है आपको बताया जाएगा. इसके अलावा और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि आपने ऑब्वियसली पढ़ने हैं. ये सिर्फ आई एम टॉकिंग अबाउट द कोर्स कोड नंबर 101, right? You will have to 1 or 2, 1 or 3. Obviously, that will be the base of your English semester, especially if you want to get your degree in English. ओके जी, अब वो क्या क्या कह रहा है इसके अंदर, लेट्स सी, ताकि आपको इसके बारे में जरा थोड़ा सा पता चल जाए कि आपने जो है आगे चल के जो किस तरीके से इस कोर्स कोड को जो है वो आपने मेंटली प्रिपेयर करने के बाद पढ़ना भी है. क्योंकि आमतौर पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती है कि अ स्टूडेंट गेट्स एन admission in any kind of college or reputed institution, but at that state the classes are not conducted on regular basis. तो स्टूडेंट जो है वो कभी रोलिंग स्टोन में के इधर जा रहा होता है, कभी उधर जा रहा होता है. ठीक है, as far as my own experience is concerned, I would try my level best to accommodate my student as much as possible. So for that, obviously you will have to mark or you will have to subscribe my YouTube channel, Zubair's Academy, right? So if you want to get an education on regular basis, as far as the topic wise, so obviously subscribe my channel, right, and share as much as obviously you can with your friends, your relatives, and etc. with your community, to especially for those who are going to get admission in masters especially. So let's talk about what are the basic objectives of this. One of the objectives of this course is to inform the readers about the influence of the historical and socio-culture events upon the production of literature. इसके अंदर सबसे मेन चीज़ ये है कि आपको ये बताया था कि आप यहाँ पर आके अब आपको ये चीज़ पढ़नी है कि लिटरेचर, इसकी तारीख और इसका कल्चर जो है वो क्या था, ये कहाँ से शुरू हुआ, इससे कौन कौन से मराहल जो है वो तय किए, इन मराहल को तय करने के अंदर किन किन लोगों ने क्या क्या किरदार और कंट्रीब्यूशन जो है वो अपने अदा किए हैं. सो ऑब्वियसली यू विल रीड ऑल अबाउट दैट इन दिस कोर्स नंबर 1. Although the scope of course is quite expansive, the readers shall focus on the earlier 14th century to 19th century. It means that in this course we will have to read the history of the 500 years. Okay, during that the English flourished with the passage of time, how this English language was created, who was the founder of this language. As for everybody, I tell you about that Geoffrey Chaucer is called the father of the modern English language, because it was he who laid the foundation of the modern English language at the time, approximately 1369, 1367 approximately, more or less. Okay जी, वहाँ से लेकर from 14th century, I'm getting 1367 or 1369 up to the till in 18th century, 1799 approximately, that is called the 18th century. Right, you will see the different changes, different development in the field of poetry, in the field of drama, in the field of fiction or novel, in the field of the practical criticism, in the field of prose, in the field of American literature, and etc. Obviously, I will tell you each and everything about these things.
History of the literature written by some British literary historians will be consulted to form some socio-cultural and the political cross connection कि during that time आपको ये भी पता चलेगा कि political changes से है उस period के में क्या आई थी जब English थी वो rapidly और चलने लगे थे जिसमें Renaissance period जो है that you will see or you will read in the course as well इस Victorian age आप पढ़ेंगे Elizabethan period जो है वो आप इसके अंदर जो वो पढ़ेंगे कि what kind of the changes were made during the Victorian period and the Elizabethan period and especially as well as the Renaissance period. Okay, it is broader spectrum. The course reference to the multiple factors from the economic theories to religious, philosophical, and the metaphysical debates that, okay, when we talk about the metaphysical was a very important change, and at the time, John Donne was a founder of that change. क्योंकि उसके अंदर उसने ऐसी ऐसी चीज़ों को पर्सोनिफाई कर दिया था कि नॉन लिविंग थिंग्स को उसने लिविंग थिंग्स के अंदर कंसीडर कर दिया था और ये बताया था कि ना कि नॉन लिविंग थिंग्स को भी अगर हम पर्सोनिफाई करें इमेजिनेशन इसमें तो ये भी हमारे साथ जो है एक लिविंग थिंग्स के तौर के ऊपर जो चलती हैं और इसकी बहुत सारी पॉइंट्स है आपको राइजिंग है कुकिंग मुख्तलिफ किस्म की पॉइंट्स है वो आपको मैं साथ वक्त के साथ साथ आपके साथ डेफिनेटली मैं शेयर करूँगा ठीक है गो एंड कैचिंग स्टार जो है ये इसके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोइम है जो कि आपके कोर्स के अंदर जो है वो शामिल है ओके जी अब आते हैं जी हम कंटेंट्स के अंदर कंटेंट्स इस कोर्स के अंदर जो वो क्या है द कंटेंट ऑब्वियसली दे आर द वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग नंबर वन द मेडिवल एज द स्टार्टिंग एज द एज ऑफ द रेनेसांस एंड द रिफॉर्मेशन कि इसके अंदर रिफॉर्मेशन से वो कैसे थी और रेनेसांस पीरियड जो था वो क्या था एलिजाबेथन एज what I talked about recently, the age of Milton, the age of metaphysical and the cavalry poets, and the age of the reasons and the neoclassicism. The age of the restoration of drama, like restore. The drama was to be considered very vulgar at that time. I'm talking about the 13th century, the 14th century, obviously. But there came a very crucial change in the production and the reformation of the drama. It became, and the Shakespeare played a very vital and important role during that. Okay, the Augustan age, the age of the rise of novel, and this is a very important age when the novel flourished. Because at that time, novel was not to be taken very seriously. People were not obviously people did not read novel as much it should be read. But after that, became a change, obviously, and during that change. The people took interest and they started reading novels as well. And the age of the Romanticism. Romanticism means the period when the romantic poetry did start. Obviously, so these are the contents that we will study in the course code number 101. If you like this, my lecture, so do share, do subscribe my channel for more information and for more obviously lectures because we are going to take a start on the regular classes basis so that the students who are unable to get admission in any reputed institution as far as they want to continue their studies or they want to get their degree. So I'm making my mind to share all my knowledge and information consisted on this course of yours as far as your English subject is concerned. I do hope that you must have understood these things, you must have liked this. Do subscribe my channel and as well as you can see my videos on Instagram, Zubair's Academy as Instagram and Facebook as well and YouTube channel Zubair's Academy. इसके साथ इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफ़िज़.